When it comes to statistical significance, you must have seen that researchers usually stop when p-value is less than 0.05 and assuming that results are significant. But this only tells you that something exists, but not how strong and how meaningful the effect is. वहाँ पे एंट्री होती है इफेक्ट साइज की और बेजियन मेजरमेंट्स की, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है. सो लेट्स डिकोड देम वन बाय वन. सबसे पहले एंट्री होती है वहाँ पे ओमेगा स्क्वायर पार्शियल की या कोहन्स ओमेगा स्क्वायर पार्शियल की या पार्शियल ओमेगा स्क्वायर की. It is actually a standard which measures the strength of the effect, how strong the effect is, or it tells us how much change is explained by the treatment. If its value is 0.01, the effect is small. If its value is 0.06, the effect is medium. And if its value is beyond 0.14, the effect is very strong. For example, the value of your omega squared partial is 0.61. That means 61% of the change is explained by the treatment. Then comes the entry of Bayes factor. It compares the evidence for और अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस. अगर इसका वैल्यू 0 होगा तो इट विल फेवर नल हाइपोथेसिस. अगर इसका वैल्यू लेस देन -2 होगा तो इट विल गिव अस अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट द डिफरेंस जो एग्जिस्ट होती है बिटवीन ट्रीटमेंट्स और बिटवीन ग्रुप्स इज रियली एग्जिस्टिंग, या ये रियल डिफरेंस है. देन कम्स R square posterior and HDR, highest density interval. R square posterior जो है ये it is like our traditional R square, but it is based on probability. It gives us the probability based measurements for model fit rather than a point estimate. जिस तरह हम traditional R square को interpret करते हैं इसी तरह हम इस posterior R square को भी interpret करते हैं. उसके बाद जब हम HDI की बात करते हैं, हाईएस्ट डेंसिटी इंटरवल, इट्स लाइक अ कॉन्फिडेंस इंटरवल. इसको हम यूजुअली बोलते हैं बेजियन क्रेडिबल इंटरवल. ये हमें वो रेंज दिखाता है जहाँ पे ट्रू वैल्यू ऑफ पार्शियल ओमेगा स्क्वायर लाइज विद सर्टेनिटी. So whenever you talk about statistical significance or when it comes to statistical significance, don't stop at p-value. Go for omega square partial for strength, go for Bayes factor for evidence, and go for HDI for certainty. That is how smart statisticians usually record the data. Stay tuned for further updates. Thank you very much.